हेलो एंड वेलकम टू सॉफ्ट टॉक विद अजहर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में उन पर्सनालिटी से बात करते हैं जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है और वो यूके को मूव करे हैं और अपनी मेहनत और अपने लगन से यूके में अपना एक मकाम कायम करे हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम डॉक्टर सैयद नवीद है और उनका ताल्लुक भी हैदराबाद से है। वो डेंटिस्ट है और डेंटिस्ट के साथ साथ ओरल सर्जन भी है और डायरेक्टर है एनएस एसोसिएट्स में। इंट्रोडक्शन दीजिए मलक साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर भाई, जज़ाकल्लाह खैर। आप हमारे को इस काबिल समझे कि हमारी इंटरव्यू ले सके और आपके इस स्टीम प्रोग्राम में शामिल करें। जी हमारे को तो मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से है और हम लोग मलकपेट चंचलगुड़े के मुक़ीम हैं। जी और मेरा एजुकेशन जो है, मैं डेंटिस्ट्री से पहले बीएससी किया उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद गुलबर्गा से मैं बीडीएस किया अच्छा अच्छा और फिर 2003 में यहाँ पर मूव हुआ 2000 मास्टर्स करने के जी लिए। जी जी। वहाँ पर आप कुछ प्रैक्टिस करिए डॉक्टर साहब वहाँ पर। मैं बीएससी 96 में ख़त्म किया ओके और उसके बाद सीधे डेंटिस्ट्री में गया जी और डेंटिस्ट्री 2002 में ख़त्म हुई अच्छा और मैं इंटर्नशिप के फ़ौरन बाद यूके में हुआ। तो ओके मेरा एक डेंटल प्रैक्टिस के हवाले से हैदराबाद में कुछ कुछ एक्सपीरियंस नहीं प्रैक्टिस रहा। नहीं है ओके जी जी जी। अनफॉर्चुनेटली मैं सीधा अब यहीं पर आ अभी गया आप मैं। जैसा बताया डॉक्टर साहब कि आप 2003 में मूव हुए हैं जी यूके को। जी जी उसका यूके को मूव होने का आपका पर्पस क्या था डॉक्टर साहब वो टाइम पे। जी। मैं यहाँ पे मास्टर्स करने के लिए आया अच्छा और मैं क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जो वाइट चैपल में है, जी जी वहाँ पर एमएससी इन ओरल पैथोलॉजी में एडमिशन लिया था। ओके माशाल्लाह ओके तो वो एक नॉन क्लिनिकल वो है कोर्स है, जी जिसमें पेशेंट्स ट्रीटमेंट नहीं रहता, बल्कि वो इट्स एकेडमिक और रिसर्च बेस्ड कोर्स। अच्छा ओके तो मैं वो 1 साल का कोर्स था। ओके मैं वो 1 साल का कोर्स किया चलिए हूँ। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब उसूलन देखा जाए तो जब कोई स्टूडेंट इंडिया में यहाँ से यहाँ पर आता है खासकर एमएस करने या एमबीए करने, वो जब आता है यहाँ पर इनिशियली, जिस बात है आपको भी पता है कि यूके कितना महंगी जगह है, तो इमीडिएट आके कहीं ना कहीं 20 आवर्स पार्ट टाइम जॉब की तलाश में लगता है और जहाँ पे जॉब भी मिले, चाहे रिटेल में मिले चाहे हॉस्पिटैलिटी मिले, कहीं भी मिले वो जॉब पार्ट टाइम सर्वाइवल के लिए उन्हें कर लेता है। अब जी आप जब आप यूके को मूव करें, अब आप एज ए प्रोफेशन डेंटिस्ट है आप, जी तो आपका जो फेस बोलो या मैं आपका जो टाइम बोलो एज ए स्टूडेंट लाइफ, वो भी नॉर्मल स्टूडेंट्स के वैसे ही गुजरा या फिर अब ऑब्वियस बात है अब आप डॉक्टर है तो आप जी इनिशियली आप ऐसे प्लेसेस में जाना मुनासिब नहीं समझते, लाइक फॉर एग्जांपल रिटेल हो या हॉस्पिटैलिटी हो। आपका भी सिलसिला कुछ ऐसी था या कुछ डिफरेंट था डॉक्टर साहब दूसरे लोगों से। अज़हर भाई, आप बिल्कुल सही फरमाएं। खास तौर पे जब स्टूडेंट के तौर पे आते, जी अब जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं, तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो नहीं है। बिल्कुल जी तो यहाँ पर आना ही एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है फैमिली जी की तरफ से। और ये जो यहाँ की कॉलेज की फीस थी, वो खुद इतनी बड़ी रकम थी जी कि अगर पेरेंट्स अगर उसको अफोर्ड करके पे भी कर सके तो लोग 100% अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इनिशियल पेमेंट होता, जी फिर उसके बाद बाकी का फीस भी हमें ही ऑर्गेनाइज करके पे जी करना है। एक तो वो उसको वो फंड्स को रिकूप करना है। दूसरा, यहाँ पर रहना जैसा आपने बताया बिल्कुल बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव जी वन ऑफ द जी मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेसेस टू लिव, एब्सोल्युटली जी इवन एज अ स्टूडेंट। तो उसके लिए आपको स्टे फंड या स्कॉलरशिप तो नहीं है, जी तो उसके लिए आपको सपोर्ट करने के लिए खुद ही आपको इनकम करना पड़ता। तो उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह के सारे स्टूडेंट मेहनत करते हैं जी और जॉब्स की सर्च करते हैं, जैसे हम लैंड हुए, पहला काम वही था। स्टूडेंट कॉलेज में गए, इंडक्शन कोर्स हुआ। पहले तो सोचा था कि इतना एक्सपेंसिव कोर्स है क्या। हम लोग जब आ रहे थे रास्ते में,
हमारे दोस्त अहबाब के साथ प्लेन में वगैरह हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये कोर्स उस वक्त जो है इसकी फीस 12,000 पाउंड्स थी, अच्छा माशाल्लाह। जो कि उस वक्त 2003-4 में इट्स अ लॉट ऑफ मनी, जी इट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो हम लोग ये कंटेम्पलेट कर रहे थे कि इज इट वर्थ डूइंग दैट कोर्स। ओके तो उसमें से कई ऑप्शंस निकल के आए थे कि ये एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम लोग ये कोर्स को जो है ना कोर्स से विड्रॉ हो जाएं, अच्छा और ऐसे कोर्सेज देखें जो रिलेटिवली लेस ट्यूशन फीस हो, ओके ओके जी और जी फिर फिर देन एक्सप्लोर द ऑप्शंस बोल के। हाँ तो वैसा एक ऑप्शंस जहन में था हम जी सबके। फिर हम जब क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के इंडक्शन प्रोग्राम में गया मैं, अच्छा तो मैं इतना इम्प्रेस्ड हो गया वहाँ माशाल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर से, लाइब्रेरी से, वहाँ के स्टाफ से। मतलब वहाँ का जो स्टाफ था, मैं उन लोगों से मुलाकात किया जिनके टेक्स्ट बुक्स हम लोग बीडीएस में पढ़ रहे थे। अच्छा ओके तो वन जी ऑफ देम वाज एक डॉक्टर थे क्रिस्टियन स्कली नाम जी नाम के। तो उनकी जो टेक्स्ट बुक थी ओरल सर्जरी या फिर मेडिकल इमरजेंसीज और इन डेंटिस्ट्री के हवाले से, जी तो हम लोग जी उनकी टेक्स्ट बुक, तो हम लोग जब गए इंडक्शन में सबसे मिला रहे हैं, तो उनसे भी मिला, मैं बोला, अरे मैं वाज लाइक आई वाज स्टार स्टक। ओके प्रिविलेज समझे हाँ, काइंड ऑफ तो आपके मतलब लिए अब जितने भी देख रहे हैं फिर, और ऐसे रिसर्चर्स जिनके नाम हम जर्नल्स में पढ़ते थे, जी जी तो फिर मैं उस वक्त डिसाइड किया कि ये बेहतर है कि इस एनवायरनमेंट में जितना भी एजुकेशन हासिल कर सके कर लें। जी जी तो उस लिहाज से हम लोग आफ्टर इंडक्शन डे बाकी की फीस पे करके ज्वाइन हो गए, कंफर्म कर दिए हमारे सीट। तो अब उस हिसाब से तो सर पे प्रेशर है कि हाँ आपको बिल्कुल बाकी की फीस भी पे करना जी है बिल्कुल और सही फिर बात सरवाइव करना है। तो हम लोग लग गए दूसरे दिन से जॉब ढूंढने के लिए। अच्छा बड़ी मुश्किल थी, काफी हफ्ता तक जॉब नहीं मिल रही। पहले तो हम समझे थे कि आसान होगा, हाँ हाँ बिल्कुल मगर नहीं। तो pretty much every रिटेल आउटलेट पे, जी एवरी रेस्टोरेंट में, एवरी जी कैफे में हम सीवी बना के दाखिल किए। अच्छा फिर भी उसके बावजूद भी, खासतौर पे 2003-4 में, इट वाज अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन यूके। द रीजन बीइंग there was a lot of influx from Eastern European ईस्टर्न यूरोपियन countries. या एब्सोल्युटली यस Poland was recently joined EU, so there was a lot of workforce from available to the employers in UK from Eastern European ईस्टर्न यूरोपियन countries. साइड ओके So the competition was very fierce, even for jobs like in retail. तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं इरिट में रहा करता था। ओके तो ब्लू वाटर मॉल जो है, इट जी इज क्लोज टू इरिट। ओके सो ब्लू वाटर मॉल गए, वहां पर जितने भी आउटलेट्स थे, जितने भी शॉप्स थे, जितने भी कैफे थे, सारे हर जगह सीवी डाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दो हफ्ते के बाद एक कॉफी शॉप था, कॉफी रिपब्लिक नाम से, वहां से कॉल आया इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू वगैरह हुआ तो लोग लिए, तो वहां पे काम किए। फिर एज इन स्टूडेंट लाइफ, यू नो, आई डिड ट्यूटरिंग, जी I worked in Krispy Kreme donut, made donuts, अच्छा worked in माशाल्लाह restaurants, जी worked in Indian restaurant, worked in European restaurants, you name it, we have done it. भी अब डाले Worked in Next. So yeah, like everybody else, तो तो Alhamdulillah. फिर आपकी लाइफ भी सिमिलर ही रहती बिल्कुल, समझे दूसरों से समझे चलो Alhamdulillah, माशाल्लाह डॉक्टर साहब exact. अगर जी, ये सर्वाइवल के लिए इंसान है नहीं क्या एक प्रोफेशनल बंदा होने के साथ साथ ये फील्ड्स में भी क्या बोलते हैं सर्वाइवल के लिए आप काम करना पड़ा तो एक एक ज्यादा हिम्मत चाहिए रहता है ना डॉक्टर बिल्कुल, साहब है बिल्कुल. नहीं क्या हाँ, इट्स नॉट इजी it's not है easy. नहीं क्या And it's माशाल्लाह important life lessons as well. एब्सोल्युटली यस यू विल और लर्न द you get to लेसन्स see a lot of people कि आपका क्वेश्चन था कि क्या आप सिर्फ रिटेल में देख रहे थे। हम उसके साथ साथ, रिटेल में जॉब के साथ साथ, हमारी कोशिश ये भी थी कि डेंटल फील्ड में या मेडिकल फील्ड में भी जॉब ढूंढे, जी विच इज सही जिसके लिए जो भी जॉब हम उस वक्त एलिजिबल हों। तो उसके लिए एक एग्जाम हुआ करता था, MFDS, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन का एग्जाम होता। जी तो उसमें अगर आप पहला पार्ट पास कर लेते हैं, तो आपको एक अटैचमेंट की तरह हॉस्पिटल में जॉब मिलती। तो फिर उसके बाद आपको हाउस जॉब की तरह एक जॉब मिल जाती। तो उसमें आपको एक तो एक्सपीरियंस भी आता, जी फिर आपकी इनकम भी हो जाती। तो जी आपका एक एक एंट्री सेटलमेंट समझे आपके एंट्री हो जाती। एंट्री हो जाती तो है उसमें फील्ड में हाँ, उसकी कोशिश में जो है, हम लग गए एग्जाम देखने के लिए। प्रिपरेशन चल रहा बहुत। हमारे साथ भी थे एक कश्मीर का
लड़का था जी जो मेरे कोलीग थे यूनिवर्सिटी में, उसके साथ मिलकर हम तैयारी कर रहे थे MFDS की MJ। तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंट तो हो गया था कि भाई पार्ट 1 अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह चाहा तो पास हो सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो एग्ज़ाम था अप्रैल की 4th को। अनफॉर्चुनेटली हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया मई 31st को, तो मेरे को एग्ज़ाम छूट के जाना पड़ा। तो उस वजह से वो चीज़ भी डिले हो गई, जी तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। तो हम थोड़े दिन के बाद फिर वापस आए, फिर लगे रहे एग्ज़ाम्स वगैरह क्लियर करने के लिए। तो वो स्ट्रगल चलता रहा, मगर हम क्योंकि व्हेन आई वाज हियर आई वाज ऑलरेडी एंगेज्ड। एंगेज अच्छा तो जैसा आप बताया नेक्स्ट जी स्टेप वुड हैव बीन मैरिज। तो अब वो भी प्रेशर जी था कि मैरिज के लिए भी आपको आपको अ, फंड्स इकट्ठे करने जी हैं। जी 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 तो कोशिश चल रही थी चलिए समझे। माशाल्लाह जी समझे जी डॉक्टर साहब हाँ हमारे टीम जो आप पे रिसर्च करी है आपको हमें पता चला कि आपके दो दोस्त हैं जी जी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से समझे जी। तो क्या एज है डॉक्टर साहब बड़ी बेटी इज 17 अच्छा एंड दूसरी बेटी 7 साल की है। माशाल्लाह जी साहब जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह डॉक्टर साहब आपके दोस्तर आप भी जैसा बताया 17 साल के मगर आप माशाल्लाह से इतने यंग दिखते हैं डॉक्टर अरे साहब इसका शुक्रिया। इसका राज क्या है क्या कुछ है आप एक्टिविटी करते हैं हॉबीज है या कुछ आपके इंटरेस्ट क्या कुछ भाई राज तो कुछ भी नहीं है। हाँ, वो अगर कुछ दिख रहा तो बस अच्छे जीन्स को और अल्लाह ताला की जो है ना रहमत और फजल को भी दूंगा मैं क्रेडिट। जी अलबत्ता इंटरेस्ट वाइज ज्यादा कुछ शौक नहीं है। जी मैं उतना स्पोर्टिव नहीं हूँ। हाँ आई हैव नॉट एक्सेल्ड इन स्पोर्ट्स बट आई लाइक टू कीप माई सेल्फ फिट। फिट ओके तो वही राज है तो समझे बस आपकी फिटनेस का फिटनेस एंथुजियास्ट बोल सकते हैं माशाल्लाह आप थोड़ी बहुत। माशाल्लाह समझे तो डॉक्टर साहब अब आपका जो एम्प्लॉयमेंट है अब जी आप अपनी सर्विसेज लीडिंग केयर प्रोवाइडर हेल्थ केयर प्रोवाइडर जी जी भोपा जी से आप उनको आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जी जी तो आपका भोपा में एंट्री कैसे हुई डॉक्टर साहब है ना क्या बिकॉज एज ए लीडिंग हेल्थ एज अभी जस्ट जी मैं जी बताया जी कि जी एज ए जी बिल्कुल। लीडिंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर है भोपा है ना क्या वन ऑफ द तो आप आपकी एंट्री भोपा का कैसे हुई एंट्री जी 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 ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है अजहर भाई। जी तो मैं वहीं से शुरू लेके चलूंगा जहाँ पे मैं छोड़ा था जी आपको जी 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 कि अब 2004 में एग्जाम था। अब दूसरे एग्जाम की तैयारी हो रही थी, ये कॉफी शॉप में जॉब जॉब चल रही थी और उसके रिलेटेड जॉब्स डेंटिस्ट के रिलेटेड जॉब्स ढूंढ रहे थे। फिर 2005 में शादी भी तय थी, तो लिहाजा अब शेड्यूल तो बिजी था अब आपका बहुत शेड्यूल बिजी था। अब हर तरह से प्रेशर था कि कुछ ना कुछ करना जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल तो हम जितने भी एवेन्यूज है चेक कर रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे जी ऑप्शंस। तो उसमें से मेट्रो में एक छोटा सा ऐड देखे कि वी आर लुकिंग फॉर डेंटल नर्सेस और डेंटल असिस्टेंट बोल के। तो हम अच्छा बोले चलो जाएंगे बात करेंगे। जी तो हम उनको कॉन्टैक्ट किया, हमारा CV वगैरह भेजे, तो लोग कॉन्टैक्ट वापस किए, तो बुलाया 7 ओक्स में आ जाओ आप। अच्छा तो मुझे एड्रेस वगैरह दो। मैं बोला जब तक ड्राइव नहीं करा था, लोग बोले यू कम टू स्टेशन वी विल रिसीव यू एट द ओके स्टेशन। ओके तो हम 7X स्टेशन चले गए। हाँ हाँ तो दे केम एंड रिसीव्ड अस। हम बोल सोचे कि अरे ये शायद बड़ी कंपनी है। ये एक दिस वाज फ्रॉम एन एजेंसी, तो शायद बड़ा ऑफिस वगैरह होगा। तो दे पिक मी अप, दे टुक मी फॉर इंटरव्यू एंड आई वाज सरप्राइज, दे टुक मी टू ए कैफे इन 7 ओक्स। मैं बोला अरे ये तो ऑफिस के जैसा तो नहीं लग रहा। तो फिर उन लोग कॉफी शॉप में इंटरव्यू हो रही है। तो जी बेसिकली उनका सिनारियो था कि वो भी दो स्ट्रगलिंग नर्सेस थे, दे वर अच्छा सेटिंग अप ए एजेंसी। अच्छा तो वो लोग दे वर ट्राइंग टू गेट ए पूल ऑफ नर्सेस। हाँ तो वो लोग क्या है, वो नर्सेस उनके पास कॉन्टैक्ट रहेंगे तो जब भी जो डेंटल प्रैक्टिस में नर्सेस की रिक्वायरमेंट होगी इमरजेंसी में नेसेसरी जरूरत पड़ेंगे इमरजेंसी तो लोग प्रोवाइड रिक्वायरमेंट करेंगे। प्रोवाइड करिए ओके तो ओके वो उसका वो था, तो मतलब ऐसा कोई जॉब फिक्स नहीं थी। ओके वो खाली ओके लोग हमारा नाम लेकर डिटेल्स लेना चाह रहे हैं। तो फिर वो लोग वगैरह दिए। लोग बोला अरे तुम तो ज्यादा क्वालिफाई है पोजीशन के लिए, आर यू स्टिल विलिंग टू वर्क? बोला गिवन द सिचुएशन आई एम हैप्पी टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क। या एब्सोल्युटली जी तो वो लोग फिर एक हफ्ते के बाद बोले कि अरे 7 Oaks में ये दिस वाज ओएसिस oh this is बिफोर। before yeah absolutely So okay in Oasis, we need a dental nurse for just one day. Are you able to go to Mabala? Okay, it's 7 a.m. By the time I get there, it'll probably be 9, half past 9, 10. Is that okay? Yeah, you can go there. So that was my first
entry into the OAC dental practice in Seven Oaks. In Seven Oaks. But that was only for a day. Okay. So, or until then, I had no exposure of dentistry in UK. Absolutely. That, I was about to say that was your first experience into your field related work. Right? Yeah, absolutely. मैं कोई यहाँ का setup dental setup कैसा रहता है सो भी नहीं मालूम था. बिल्कुल जी. So that was interesting. But Alhamdulillah, the day went well. They were happy with my work, whatever I could help them out with. And then I happened, मैं बोला चलो it's a good opportunity. I'll have to make contacts. I spoke to all the dentists. Introduced myself, expressed my interest in the field, and what I'm planning to do, and I'm willing to get into employment. So luckily, they were happy with the way I've approached or what the work I did. Yeah. And the very next day, they themselves called instead of agency calling. They bypassed the agency and they called me directly. They contacted me directly for further for one more day. And the next day, I went in. And that day was completely different to the first day. First day was a bit quiet. Second, the other day was very busy. And I was struggling to manage. However, it happened. और lunch break में जो है ना the principal dentist जो होता है he called me up and he said I want to have a word. मैं डर गया, बोला इतना busy day था, might have done some mistake. Yeah, absolutely possible. Then he kept asking me questions. What do you want to do? Blah blah blah. So and I was honest. And then he expressed, you said you wanted to do a permanent job here or in dentistry as a dental assistant. Is that the case? I said, yes, I would be happy to if you got an opening. Said, yeah, we have an opening. Would you be interested? I said, I would definitely be. And they said, okay, I'm happy to come for interview anytime. Sure. Then he said, no, this was interview and you'll be happy to hear that, we're happy to, employ you. Yeah. So that's how it started. Mashallah, Dr. Sahab, I think probably, the first experience you had with those guys calling you and asking you to come to the work. Yeah. I think probably that was your kind of you can say a path to enter into the field of Allah Ta'ala's absolutely. You understand the pro, mashallah, Dr. Sahab, UK, there is a problem. I don't know whether this is a problem or not, especially with the teenagers. At this certain age, when you enter into the teenage group, the dental practice, they refer you to orthodontist for your braces. Yes. Is it a problem in this country, Doctor? Because we have never seen this kind of problem in India. Yes. But here we see every second teenager has been referred to the orthodontist. Yes. Why is this, Doctor? Is this something really a problem with the kids, with the teenagers, with their teeth, or is it something else? It's a very good question, Azhar bhai. It's a very good question. It's a huge contrast between the services provided here in UK and in India. So also there is also awareness of as well is a factor as well. Yeah. So what happens in NHS dentistry is if you're registered, if your child is registered with NHS dentist, they would recommend and 6 monthly or yearly checkups, routine checkups, and everything. So once they reach a certain age, especially around 12 to 13 or 11 to 13, when they lose all their baby teeth, and then they'll assess the arrangement of permanent teeth. And most of the time, the teeth, or when the teeth come through, they're not always in the correct position. Okay. So if you don't mind me asking, why is that? It is it happens. This happens naturally. Is it because maybe the drinks? No. So the arrangement of teeth is mainly because of because inheritance. Because it's inheritance. Okay. Whatever type of teeth, arrangement of teeth your parents would have, you would mostly have a similar. Right. So that's mostly genetic. The other thing which will affect the arrangement of teeth particularly would be some habits like thumb sucking, mouth breathing, adenoids,
that will also affect fingers, digital tacking, and biting pencils and all those dental oral habits will affect the arrangement of teeth. So that's when the dentist assess the arrangement of teeth. If they're not straight, if they are either proclined, zyada nikle hue dant, or if they are crowded, then dentist should recommend and refer to orthodontist, because it's better for the teeth to be straight. Mainly for the ease of oral hygiene, ease of cleaning, and obviously and the other thing is the appearance as well. So this service is provided by the NHS. So also इसलिए क्या करते हैं, every dentist once if they're registered, all that once they're 12, 13, they'll refer to the orthodontist. Orthodontist will assess, and if it is really bad by a certain extent, then orthodontist will say, okay, braces will be covered by the NHS. Hence, most of the people get braces. Do they, the NHS do the practice? Do they only send the people, the children who have uneven teeth, or do they send everybody? No, they send mostly teeth with patients or kids with uneven teeth. Oh, okay, okay. Yeah, I was thinking, because thing is, I came to know so many. I know so many children, and everyone, they got the braces. Yes. So I was thinking, we came from India. We never had braces in India. We never heard about this. I had braces. Did you? Yes, I did. Mashallah. Okay. Okay. The reason why I had braces, because not because of my teeth were uneven. Because my jaw was fractured. Okay. Because I was playing cricket, one of the cricket match. Okay. And the hard ball came and hit my jaw. Okay. My jaw got fractured. Then obviously I had to have braces. Yes. So I had the braces at that time to fix my fractured jaw. Right. It's not that I had uneven teeth or anything, and we never heard anyone having braces because they had any uneven teeth or anything. So okay, that's so fine. What happens is India is, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये जो braces है, अगर uneven teeth है तो that will be covered by the NHS. It will be free. So that's why a lot of people have it. And if you were to go and have that orthodontic treatment done privately, it will be very expensive. Expensive, is it? It will be in thousands of pounds. That's the reason why in India, if somebody wants to have the teeth corrected, there's no NHS provision, so they have to have it privately done. And even India, it's in thousands of rupees. So a lot of people who think it's not important, who don't prioritize or are not aware or can't afford. So that's why they don't have treatment. That's true, Doctor. Yeah, that's true. Doctor, other than you providing your services with Bupa, are you providing your services with any other dental practice or health care centers or healthcare providers or anything else? Yeah, absolutely. So after qualifying as a dentist, obviously when I joined Bupa, they took me as a dental nurse. And then during that time, alhamdulillah, the money got coming in, so I was able to pass exams, and I got married in that time as well. And then I stayed in Bupa because after I passed exam, they offered me a job as a dentist in Bupa. So while after a few years as a general dentist, I also I was doing full time in Bupa. Then after a few years in 2017, I qualified as oral surgeon. Oral surgeons, So then that's when I started doing oral surgery in other practices. I provide my do oral surgery in practice in Swanley in Kent, and there's a practice in Canary Wharf for Docklands where I do oral surgery as well. That's very good. What is the current situation of dental in NHS? Okay, this is very interesting as well. Very good question. So NHS dentistry has always been struggling in a way because there's always a discrepancy. The need of the population is higher than the service which NHS could provide. So that's the reason why, and that's why, and there has always been a challenge of access
of dentistry by the NHS dentistry by the population. So after COVID, it has become even more difficult. Okay. So the people couldn't find NHS dentists, and those who can afford can easily find private dentists. But the private dentist is very expensive. You have to pay for it. So the reason for that is the funding of NHS dentistry. Okay. So from the information I have, I don't think government for decades has spent any more money. They didn't put any more extra money into NHS dentistry. And the new contracts came out back in 2006. And the contract stayed the same until recently, until or after COVID, which means NHS kept putting exactly the same amount of money every year. And then obviously the needs of the population kept increasing. So that way the need of the population increased, but the service provision stays the same. And hence, the waiting list is going up. Absolutely. The waiting list is, NHS waiting list is going up and up. So they've made few changes, but it's definitely not nowhere near to provide full scale. So it means that dentistry. NHS still provide the services of dentistry. Yes, it's not that no, if you are adult or anything, so there's no such thing as treatment of your teeth or anything in NHS. There is still possibility. Just because it's a high waiting list, people will does not want to go and get the treatment in NHS. That they rather go and do it in the privately. Exactly. Okay. So I mean, there is NHS does provide dentistry. Sure. And there are lots of NHS dentists around the country. And they have got this, they will see the patients on basis of NHS. They will provide some basic dentistry. Sure. But again, you have to be registered with a particular dentist and keep up your regular appointments. And then they'll maintain your teeth. And then as and when you need any treatment, they will provide it on the NHS. Sure. The next question, that's a very interesting point you just mentioned, Dr. Saab. And my next question is relating to that one. With regards to registering yourself or anyone in your family with the dental practice, is there anything as such that if you don't take appointment for particular period, like for example 6 months, 9 months, because the problem with the teeth is not regular like that, the way you get flu. If the problem with your teeth or tooth or anything is rare, then obviously if you have a problem, then people will go obviously to the practice and they say that okay, I have a problem, and then obviously the treatment will start. Is there anything as such that if you don't visit the practice for a certain number of months or period or thing, will they automatically take you off from the register? This is very good question, very important as well. So I'll break your question down into a few things. Number one, the last thing you mentioned, this is happening. Yes. If you don't see your registered dentist for few years, they're unfortunately are taking you out of their list, out of their register. Basically, they're deregistering you. So, Dr. I just want, can we re-register? Yes, you can re-register. The reason why they're taking it out is obviously, like I said, it's about the funding. Sure. Okay. So with the limited funding they have got, they could only provide a certain amount of dental work or certain amount of dental services to the patient. So and the demand is high. So if you're not attending regularly, which means you might not need those services. So what they'll do is they'll give your space to somebody who might need the work. Okay. So the reason why it's very important, the other question, like you said, is you don't get dental problems so often, and hence you don't go to the dentist. Then I'll come to that point now. So the reason why you need to go and see your dentist regularly is so the dental problems, you don't have any symptoms like pain or other swelling or things like when the dental problem starts.
Okay, so the idea is if you go to the dentist and if they catch the problem before Yeah. you get symptoms of pain, Yeah. then you'll be saved from getting abscesses, pain, and things. Okay. And hence that way you could save NHS money as well. Sure. So there will not be. It's like prevention is better than cure. Sure, absolutely. Yes. Okay, Yeah. so this is what NHS and the NHS dentists are trying to promote is try and attend the dentist regularly so that you don't get problems anyway, and we Yeah. can treat you in early stages of Stages. dental Okay. problems. Irrespective of whether you have issues or problems with your teeth or tooth or anything, but you still It's take a always regular good. You appointment, might, yeah, attend the appointment, yeah, and just visit the practice. To absolutely, check up, get your absolutely. teeth checked up. That you are involved in many charitable organizations as well. So tell me, how do you like, for example, or who do you support as how do you provide your services to the charitable organization? Are you directly involved with them, or you just contribute or donate to any such any organization as such? Oh, I mean, charity is part of your faith. Yeah. It's an obligatory faith to do zakat and sadaqat and things like that. I know. I mean, pretty much every Muslim, practicing Muslim, would do charity at individual level or collectively or an organization. So, Alhamdulillah, I try my best to do what I could do, what is obligatory from me. Also, I mean, I'm also. Sometimes it's always good idea to be organized and do it collectively. Yeah. So the results are better if you do things collectively. So similarly, obviously, I try and help with the local organization here. Some masajids do some charitable activities, so I get involved and provide whatever I could, uh, personally or monetarily. And we also have an organization called MWS, who are mainly concentrating on educating young children in Hyderabad, especially in Mashirabad and areas like that. So yeah, they kind of collect funds from here, find deserving people's orphans and who are below poverty line, and pay their school fees, that sort of thing. So I'm involved in that as well. डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप टाइम निकाले हैं हमारे शो में आए। अब जाने से पहले एक एडवाइस हमारे व्यूवर्स के लिए आप देते जाइए। आपने ऑलरेडी एडवाइस हेल्थ रिलेटेड तो दी है हमारे व्यूवर्स के लिए, एक जनरल एक एडवाइस भी दे ताकि लोगों को ताकि उनकी लाइफ भी आगे जाके सक्सेसफुल है। तो दिस जनरल यंग स्टूडेंट्स भी रहते हैं यहाँ पर, यंग लोग भी रहते हैं, वो डिफरेंट ग्रुप्स रहते हैं यहाँ पर, तो उनके लिए आप एक जनरल एडवाइस अगर आप दे दे तो डॉक्टर साहब प्लीज। तो अजहर भाई, मैं ये तो नहीं कहूँगा, आई डोंट फील दैट आई एम एनी अथॉरिटी टू गिव एनी एडवाइस, बट वन थिंग आई कुड से इज आई विल एडवाइज व्हाट आई एडवाइज माय सेल्फ constantly, even now. Obviously, a few things which I would advise myself is not to procrastinate. मतलब हर चीज को अपन पोस्टपोन कर, आज नहीं कल किसी in any matter, even with regards to fitness goals or कुछ भी, just do it and don't be complacent. अरे कुछ भी नहीं होता, करेंगे जब करेंगे. Don't be complacent and sheer perseverance. If you because success doesn't happen in a day. Or say, for example, you'll not be successful as soon as you land in this country. You think, okay, मैं आ गया, काम हो गया. Now it's accumulation of your hard work over years, decades. So it takes years to get to where you want to be. So sheer perseverance, hard work. That's what I would say. थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर साहब के एडवाइस लोगों के लिए कि मेहनत इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट हार्ड वर्क यू विल नॉट एबल टू अचीव सक्सेस इन द फ्यूचर। सो irrespective of whatever happens in your life, you just work hard. Simple. The success will come.
if it has to come, it will definitely come to you. But the most important thing is you work hard. So what Dr. Naved said, that he has worked very hard in a struggling time, and he is, alhamdulillah, by the grace of God, he is at this stage now, with only with his hard work and dedication. So this is very important. So you work hard. And the other thing, Dr. Naved has advised to make sure you keep your teeth healthy. Brush your teeth. Brushing twice a day, and keep your kids away from sweets. You can give them often, maybe as he said, once a day or something. The rest, no. And hopefully keep your appointments with the dentist 6 monthly, especially with kids. Absolutely. And if you don't want the NHS practice to take off your name from the register, so follow their instruction. So thank you, Dr. Thank you very much. So much. Thank you so much. Your valuable time. And please, I hope you will like it. Thank you very much. Thank you.